गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह बारिश हो रही है, वेदर का हाल देख ही सकते हो। whatever. Hey everyone, welcome back to the channel. This video is really important because today I am restarting. Yes, I took break. I lost consistency. I wasn't studying the way I wanted to do. But this is gonna be the last stress of 2025 and I'm not letting this year like this hell. तो चलो देख ही सकते हो मेरा डेस्क का हाल क्या हो रखा है। पहले इसको ठीक करते हैं, फिर ठीक करते करते कुछ बातें करते हैं। हाँ, सो टुडे आई एम शेयरिंग माई 45 days comeback plan. The plan I will use to rebuild my momentum and get fully locked for NEET 2026. If you also feel stuck or behind, trust me, you can restart right now. Let's do it together. To be honest, the last few weeks were not the best. Some days I wasn't studying properly. My routine broke. My confidence dropped. मैं थोड़ा सा मिडिल में घूमने भी गया था, फैमिली के साथ थोड़ा ब्रेक भी लिया था. But I realized something. A break is not the end. It's just a pause. What matters is how strongly I restart and after that pause. And that's why I am calling this phase the last stretch of 2025. 45 days, the final chance. One final push before the new year beginning. This is more than a discipline. This is a winter arc. While others sleep late, I will wake up early. While others delay, I will execute. While others complain, I will build momentum. These 45 days are not about perfection. These are about consistency, growth, and getting that spark you back. So, इस फेज में मैं दो तरह से प्लान किया हूँ. पहले तो जो लाइव क्लास है वो मैं कंटिन्यू करूँगा. लाइव क्लास लाइक फिजिक्स में यकीन 2.0 से वेब्स एमआर सर का वेब से मैं स्टार्ट करूँगा, या फिर 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, शायद बोटानी का 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा. ऑर्गेनिक का IUPAC मेरा हो गया था, फिर भी एक वन शॉट कर लूँगा. लाइव क्लास में आधा दिन करूँगा और सेल्फ स्टडी के टाइम मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा है. सेल्फ स्टडी के वक्त मैं इस 45 डेज़ में मैंने एक दिन में दो सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स और बोटनी एंड जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स प्लस बोटनी, एक दिन जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ये करके 45 डेज़ में फिजिक्स का 11th कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा. देखते हैं क्या होता है, और बाकी तो मैं डेली शेयर करता ही रहूँगा. चलो देखते हैं क्या होता है. और क्या बोलूँ मैं, फिज़िक्स में थोड़ा कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है. बायोलॉजी में लेक्चर वन शॉट करूँगा, जो मैं चैप्टर्स करने की बात करूँ 2 दिन में शायद एक चैप्टर हो जाएगा, या फिर फिजिक्स में 3 दिन लगेगा तो 3 दिन दूंगा. पहले लेक्चर, फिर DPPs बैच के, फिर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा. और डेफिनेटली आई विल शेयर माई प्रोग्रेस एवरी वीक और एवरी डे. कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कितने कुछ किया, आई विल शेयर दैट एवरीथिंग इन दिस चैनल. सो कीप सपोर्टिंग and following me, and you can join my journey. Please join my journey. We will crack this NEET together. If you are watching this and you feel like you wasted your time, listen, you still have time. Restart today, restart now. Restart with me. We'll crack this. This is your life. This is your dream. Nobody else is going to study for you. You have to study for you. Nobody else will become the doctor behalf of you. You have to fulfill your dream to be. I feel I am getting back up. You can do that same time. Let's join this journey together. Comment your feelings. I will reply each and every comment. And if you made your mind to restart, then this last stretch of 2025, this 45 days is gonna change you. Let's do it together. And remember one thing: study, struggle, and serve.